All right. Yes. So we have different modes of nutrition, but in today's class, we are going to discuss about the autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition in which all green plants prepare their own food. They are called as autotrophs. All right. So autotrophic nutrition is what? It is the mode of nutrition in which the organism prepares its own food, and they are called as autotrophic. It is called as autotrophic nutrition. So mostly green plants and blue-green algae, they do autotrophic nutrition. Green plants and blue-green algae. Okay. So because green plants and blue-green algae, both of them, they consist of chlorophyll. अच्छा ब्लू ग्रीन एल्गी का एक और नाम बताओ इफ यू नो एनी other name for blue green algae, any other name for blue green algae? They are also called as cyanobacteria. They are also called as cyanobacteria. They also consist of the type of chlorophyll which plants possess. Plants के पास जो chlorophyll होता है वही same chlorophyll blue green algae में भी होता है. Okay. Autotrophic nutrition is fulfilled by process by which autotroph intake CO2 and water and convert this into carbohydrate. So they take CO2, they take water, and they convert it into carbohydrate. That is what we have to study in this whole chapter. Carbohydrate is what? Glucose. They form oxygen and water vapors. All right. Now there are two type of autotrophic nutrition. The autotrophic nutrition can happen by two ways. One is photosynthesis and another is chemosynthesis. Okay. So photosynthesis means in which the sunlight is utilized for the production of food. And mostly the organism who do photosynthesis, they are called as photoautotrophs. Okay. And chemosynthesis, they are called as chemoautotrophs. Okay. Okay. And they use energy from sunlight to produce the food. Okay, so all green plants come under the category of photosynthesis and cyanobacteria, or you can say blue green algae. Chemoautotrophs are those who uses the chemicals, who uses energy from oxidation of inorganic substances to synthesize organic compounds. Okay, तो ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं ताकि वो उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सके. फॉर एग्जांपल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, सल्फर, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. इनको जब वो ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे सल्फर को ऑक्सीडाइज किया तो SO2 बन गया, इस तरीके से. तो वो सल्फर को ऑक्सीडाइज करेंगे तो दे विल बिकम सल्फर बैक्टीरिया. दे यूटिलाइज सल्फर टू फॉर्म सल्फेट, लाइक द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास. दे ऑक्सीडाइज अमोनियम टू नाइट्रेट, अमोनियम से नाइट्रेट बना देते हैं. तो ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, समझ में आ गया कि जो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का होता है. फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी हो सकता है और कीमोसिंथेसिस के थ्रू भी हो सकता है. राइट, नाउ वी कम ऑन टू द फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस जो टर्म है वो बार्न्स ने दिया था, BARNES. द साइंटिस्ट नेम इज बार्न्स. ऑलराइट. So, photosynthesis is an important process by which food is formed. The plant makes food utilizing sunlight, water, which provides nourishment to the organisms. The chlorophyll is present in the green parts of the leaf, which absorb light energy. तो एक्चुअली क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो लाइट को रिसीव करता है और उसको एब्जॉर्ब करता है, so that photosynthesis can take place. All right.
This light energy is utilized to split water. Actually, photosynthesis में तीन steps होते हैं that we will do it right now. First of all, the light energy is absorbed by chlorophyll. Then this light energy splits the water into hydrogen and oxygen. Then this hydrogen reduces carbon dioxide to form carbohydrates. So जो reaction हम पढ़ते हैं हमेशा CO2 plus water gives you glucose प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर्स. तो इसमें से पहला स्टेप जो होता है वो होता है पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो वाटर होता है ब्रेक हो जाता है टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Keep quiet. Yes, I'm sorry. Okay. All right. So अब उसके बाद क्या होता है, ये वाटर है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं इसको स्प्लिट करने के बाद, तो ये जो ये जो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन तो निकल गया यहाँ पे, ठीक है. अब ये जो हाइड्रोजन होता है ये CO2 पे जाके रिड्यूस कर देता है. इट रिड्यूसेस CO2 टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. सो एक्चुअली द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ऑक्सीजन यूज करने के लिए CO2 और H2O में से कौन इंपॉर्टेंट होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, बेटा प्लीज म्यूट कर लेना. यस. So the question is asked कि water ऑक्सीजन कहाँ से बन रहा है, वाटर से बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से. तो द आंसर इज ऑक्सीजन वाटर से बनता है, क्योंकि जब वाटर स्प्लिट होता है तो H2 और ऑक्सीजन बनता है. और ग्लूकोज कहाँ से बन रहा है, CO2 की हेल्प से, क्योंकि CO2 रिड्यूस हो रहा है टू फॉर्म ग्लूकोज. ओके, इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. तो कार्बन क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे कि क्लोरोफिल क्यों एसेंशियल होता है और हम कैसे पता लगा सकते हैं क्लोरोफिल एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. All right, so now the next thing, we just write about the slide first, then we'll start with chloroplast. Okay, so write down the definition. You can write down the definition. Definition. Okay, please write the definition first, and then you have to write these points. This point, this point, and this point. 3 points. After writing definition, you have to write the events. Events in photosynthesis. Yeah, yeah. ठीक है, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया बेटा.
Done. All of you have done. Okay, so what are the raw materials for photosynthesis? We need sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, we need water, right? So chlorophyll, it is a green pigment in the plants. It absorbs sunlight, and carbon dioxide enters through stomata. We will learn that how stomata opens, how stomata closes. All right. Water, the source of water is the soil. So we water the plant, the water goes in the soil, and from the soil it is taken up by the roots with the help of xylem. Okay. So how do raw materials become available to the plant? Water from the soil through xylem tissue into the roots and stems. Carbon dioxide comes in the leaf through the stomata. So ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, दैट यू शुड नो कि कहाँ से रॉ मटेरियल्स आते हैं. ओके, उसको हम लोग डिटेल में भी करेंगे कि एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से अंदर एंटर कर रहा है, स्टोमेटा कैसे खोल रहा है, ये सब हम लोग करेंगे. राइट. सो नेक्स्ट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. Before studying cross section in your cellina, there is chloroplast. All right, so all of you should know how to make chloroplast diagram. What is chloroplast? Anyone? क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्या स्टोर करता है? Yes, so inside the thylakoid, they store the chlorophyll. The collection of thylakoid is called as granum. So in the ninth class, we have done cell chapter. The chloroplast is a double membrane structure. This is the outer membrane and this is the inner membrane. Okay, and inside the membrane there is matrix. Okay, the matrix is called as stroma. Okay, and these coin-like structures are called as thylakoid. But when thylakoid group together, ये grouping जब कर लेते हैं, these are called as grana. These are called as grana. Single coin is thylakoid, but when the thylakoid groups, they form the grana. Okay, and these two granas are connected with the help of stroma lamellae. They're connected with the help of stroma lamellae. Okay, here. So chloroplast का diagram बना लो फटाफट से, then we'll write something about it. Yes, draw it fast. All of you draw it fast. आपको लगता है कि हमें आता है बिना देखे बनाओ? अकॉर्डिंग टू एग्जाम, और उसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए. अगर आप में से अगर कोई ड्रॉ नहीं कर रहा, देन इट इज योर फॉल्ट कि एग्जाम में भी नहीं आएगा फिर ड्रॉ करना. ड्रॉ इट.
You draw on the diagram. How many students want to go to washroom? दो लोगों ने बोला है अभी. अच्छा ठीक है जाओ. ये देखो 1 2 कितने लोग जा रहे हैं? 3. Till then you please write this about the chloroplast. Just a second. Please write the heading chloroplast. Yes. So chloroplast, there are some facts about chloroplast. Okay, so the second fact, which is chloroplasts are mainly present in mesophyll cell located between upper and lower epidermis. So this consists of 2 mark question. It is very important where the chloroplast is present. Okay, there are two placement, two locations are there. One is in the mesophyll cell, second is in the guard cell. So I'll show you how guard cells and mesophyll cells are present in the leaf. Okay, just a second. Have you done this? Yes. Should I unshare this? The people who have gone to washroom, they haven't come.
Okay, I'm giving you 2 minutes so that they can also come, and then I'll show you. Done? All right. All right. Now, just a second. All right. So in this diagram, you can see it is a cross section of leaf. This is the upper epidermis, right? And this is the lower epidermis. तो मैंने आपको बोला था कि क्लोरोप्लास्ट अपर और लोअर के बीच में होते हैं, अपर और लोअर एपिडर्मिस के मिडिल में. तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्लोरोप्लास्ट. ठीक है बेटा. सो दीस सेल्स आर कॉल्ड एज पैलिसेड सेल्स. Palisade cells, and these cells are called as the spongy cells. Yes, spongy parenchyma. Okay. So these together they form the mesophyll. All right. These together form the mesophyll. एंड अदर देन दैट मैंने सेकंड लोकेशन आपको बताई थी गार्ड सेल में. तो ये ओपनिंग जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो बीच में ओपनिंग है, इट इज द स्टोमेटल ओपनिंग. ये स्टोमेटा है. स्टोमेटा के आसपास क्या होते हैं ये आपको पता है ना? आई जस्ट ड्रॉ इट. अच्छा मैं दिखा देती हूँ आपको. स्टोमेटा के आसपास क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं. तो ये हमारे गार्ड सेल्स हैं. ठीक है. So inside the guard cell also the chloroplasts are present. So I told you two locations. One in the guard cell, another one is in between the upper and lower epidermis, or you can say vice versa. You can say palisade cell and spongy cells में होते हैं. And both these cell, palisade and spongy cells, they form mesophyll. Clear to all of you? Okay. So I'm just sharing that board once again. So we can add one more point over here. You can write mesophyll cell located between upper and lower epidermis. In bracket, you can write palisade and spongy cells. ठीक है. अपर एपिडर्मिस की तरफ पैलिसेड सेल्स होते हैं और लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्पॉन्जी सेल्स होते हैं. ठीक है. दोनों मिलके मेसोफिल सेल्स बनाते हैं. Okay, now there are two type of chlorophyll. Should I scroll up? Scroll कर दूं ऊपर? Should I scroll? Okay. All right. So the next is there are two type of chlorophyll.
There are two type of chlorophyll, the chlorophyll A and chlorophyll B. Okay, so chlorophyll A and chlorophyll B. देखो, क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट की वजह से एक्टिवेट होता है, बट too much of light, too much of light can destroy the chlorophyll. So because of that, there are two type of chlorophylls. Okay, so chlorophyll absorb light at in the visible spectrum. आपको पता है कि visible spectrum आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. What is the visible spectrum? जब लाइट डिस्पर्स होती है, व्हाइट लाइट जिसका डिस्पर्शन होता है तो वाइब्योर बनता है. You know that, right? Dispersion of white light, or you can say splitting of white light, forms the seven colors. Okay, out of which the blue and the red regions, the blue and the red regions of visible spectrum are most sensitive for chlorophyll. Sorry, are most sensitive for the photosynthesis. Because in these two regions, the chlorophyll absorb the light. Okay, so basically, blue and red regions of the light, they like what happens in कि ये दोनों एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो रिफ्लेक्ट होता है वो हमें नजर आता है, दैट इज अ ग्रीन कलर. ओके, सो क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन. Why? Because blue and red lights are absorbed and green is reflected. तो जो रिफ्लेक्ट होता है वही हमें नजर आता है. यू नो दैट, है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा है. सो यू कैन राइट दैट ब्लू and red lights of visible spectrum is absorbed, and green light is reflected. Hence, chlorophyll appears green. Right? तो इसीलिए जो ब्लू और रेड रीजन है लाइट के, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए. सो दैट इज व्हाई द ब्लू एंड रेड रीजन्स are effective for photosynthesis, are effective for photosynthesis, right? Alright, so chlorophyll जो मैंने आपको दो टाइप की बताए हैं, chlorophyll A and chlorophyll B. Out of this, the chlorophyll is the main. It is the main type of chlorophyll, okay, which absorb the sunlight. So chlorophyll A जो होता है is the main pigment which absorbs sunlight. Alright, but chlorophyll B, it is a protector. Okay, it protects the chlorophyll A. It protects the chlorophyll A from excess radiation and light. तो क्लोरोफिल बी जो है प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, वो क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो होता है उसका जो सेंट्रल कोर है, जो सेंटर में ना क्लोरोफिल ए के मैग्नीशियम होता है. ठीक है, तो ज्यादा लाइट से ये मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाता है, जलने लग जाता है, और क्लोरोफिल ए खराब हो जाता है. राइट, इसीलिए क्लोरोफिल बी उसके आसपास होता है. व्हाई, यस, व्हाई सो मच ऑफ टॉकिंग इन द क्लास? प्लीज फोकस. All right. So that is why chlorophyll B is very important, right?
Clear, everyone? Now we are going to do the theories related to stomatal closing and opening. So stomatal pore closing and opening. So according to you know that आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है दैट स्टोमेटा कैसे 7th क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ आईसीएसई में उनकी बुक में भी लिखा है कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है. वन इज द वाटर थ्योरी है ना जो वाटर के हेल्प से होता है राइट एंड अदर वन इज द पोटेशियम थ्योरी. Let's scroll it up. Yes, done. So regulation of tomato opening and closing. So there are two things involved in this. First, the water endosmosis and exosmosis. The second is potassium. Okay, potassium ion concentration theory. All right. So the first thing is as the water comes into the guard cell swells up. Okay. So here it is related with the potassium ions also. Okay. तो जैसे हम इस साइड लिखेंगे water का तो इस साइड लिखेंगे potassium का. तो potassium में क्या होता है when there is influx of potassium. ठीक है. When there is influx of yes influx of potassium in guard cells.
Okay, when there is influx of potassium in guard cell, what happens? What happens? The it promotes the endosmosis of water. It promotes endosmosis of water in guard cells. ओके, तो जैसे ही गार्ड सेल में वाटर आएगा, गार्ड सेल स्वेल अप होगा, ऑलराइट। एंड अपोजिटली इसका अपोजिट क्या होगा? जब पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स होगा, द पोटेशियम आयन इफ्लक्स फ्रॉम द गार्ड सेल, पोटेशियम बाहर जा रहा है गार्ड सेल, द पोटेशियम आयन इफ्लक्स फ्रॉम द गार्ड सेल विल प्रमोट exosmosis. Exosmosis of water from guard cells. तो यहाँ क्या होगा? Water goes out from guard cells and stomata closes. यहाँ पे स्टोमेटा opens. और ये दोनों चीजें जो हो रही हैं वो अलग अलग टाइम पे होती हैं। ये ऊपर वाला जो हो रहा है ये डे टाइम में हो रहा है, डे में, और नीचे वाला फिनोमेना इज हैपनिंग इन द नाइट टाइम, क्योंकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो नाइट टाइम में देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, so obviously we do not require opening of stomata. All right, on which point you are? Have you done both points? Yes, have you done both the points? All right, beta. So in the next class we'll move ahead, and we I think 70% chapter next class में. All right, bye. All right, okay, bye.